So last time हमने जो क्वेश्चन किया था हम उसी से आगे प्रोसीड करेंगे. It says that we have a child on a sledge and he's moving upwards with a speed of 18 meters per second. He goes to a maximum height, stops at point B, and then he moves back. We have a velocity time graph starting from 18 and the velocity becomes 0 at 12 seconds. And then from backward, when it is moving, the velocity is in the opposite direction. And downward acceleration is different because the gradient is different. This is what we are observing from the graph. What is the time taken to reach B? At B, he stops. So time will be the time when the velocity becomes 0. So it is 12 seconds. At 12 seconds, he has reached the maximum height. I'll be taking the pictures and putting the group as well. So it is 12 seconds. Now they ask us, what is the displacement in 24 seconds? The larger triangle will give you S1 and the smaller triangle will give you S2, how much you have returned. And the displacement will be S1 minus S2. For larger triangle, half base into height. Similarly, for smaller triangle, S2 is equal to half 12 into 6. अगर हमने displacement निकालनी है from the start, it will be S1 minus S2. So your answer will be 108 minus 36. Backward acceleration to be 5.5. That means you have to give the value of gradient of the graph. V minus U over T. 6 minus 0 over 12. Minus 6 मैं इसलिए ले रहा हूं because it is downwards. Answer minus 0.5 में आ जाता है या 5 में आ जाता है. Both answers are correct. आप अगर 6 लेते हैं तो फिर भी 0.5 आ रहा है. आप minus 6 लेंगे तो minus 0.5 आ जाएगा. That will only show you the direction. So it does not matter. You just have to give the value. वो कहते हैं जी जो चाइल्ड है उसका mass 70 kg है और कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द स्लोप जो है वो 80 न्यूटन है. Acceleration 0.5 है. That means my resultant force will be mg sin theta minus f. हमने f निकालना है. F1 can be calculated by ma. Mass of a child into acceleration, which is 0.5. We have just calculated that value. That will be your F1. It comes out to be 35 newtons and component of weight down the sled they have already given us 80 newtons. We don't have to calculate it because we don't know the angle. So F1 is 35, F is 80, and we have to find the value of friction. So from here, I get the value of friction as 80 minus 35, which is 45 now. This is the frictional force. Then they ask us, what is the value of the angle? We know component of weight down the slope, mg sin theta. It is 80. We have to find the angle. mg, mass is given to us as 70 kg. Simplify for sin theta. 80 divided by 70, 9.81. Theta will be equal to sine inverse. And we get the answer for the angle as 6.7 degrees. So, अगर हम question को जरा simplify करें तो we can find out the answers clearly, but we have to read the questions carefully. Next question. Okay, next you must solve the question on the worksheets and practice that, and also practice past paper questions from topicals as well, so that you have a clarity of the concept. Okay, Ji, now we have a car moving downwards. Test is of kinematics. What is meant by work? It is the product of force
and distance moved in the direction of the force. Very important definition. Mass of the car is given to you and they want component of weight. Remember, component of weight is always mg sine theta. You don't have to draw it, you just have to know the value because mg sine theta is the component weight down the slope and mg cos theta is equal to the contact force. So straight away mg sine theta is your component down the slope. 850 into 9.81 into sine 7.5, you get the value of component down the slope as 1100 newtons. The car is moving with a constant speed down the slope. Resistive force is 4600. Suddenly the force is being applied. That means backward force is 4600, forward force is component down the slope, and the car is decelerating. So you have to find the value of resultant force. Forward force minus backward force. Here it comes out to be 3500 and this will cause deceleration. 4600 will not only be there, but component of weight is also there. Now apply the value of acceleration because acceleration is always due to the resultant force. Simplify that and you get the answer as 4.1 if you round it up. Distance it traveled before coming to rest, your initial speed is 25, final speed will be 0, acceleration is minus 4.1. Constant acceleration. A is equal to, आपको मालूम है, you have to find the value of distance. V square minus U square. 0 minus 25 square is equal to 2 times minus 4.1. We simplify that for the value of S. We have the value of S here. Loss of kinetic energy, half mv square. Work done against resistive force, F into D. Force was 4600 into 76 was the distance. And this is your value for work done against resistive force. According to law of conservation of energy, loss in kinetic energy should have been equal to work done against resistive force agar wo ek plane surface pe hota, if it was not losing any height. But your work done against friction is greater. Why? Because initially it not only possessed kinetic energy, it also possessed potential energy. So that has to be added in total energy. So that is why your work done is greater because not only kinetic energy, but potential energy, both of them are converted into heat due to the work done against friction. इस तरह हम दोनों को ऐड करके अपना आंसर निकाल सकते थे. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ काइनेटिक दी हुई है. दैट इज व्हाई इट इज नॉट इक्वल. तो यहाँ पे भी हमने वर्क एनर्जी पावर का जो लॉजिक है वो अप्लाई करना है कि एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड but there must be some other energy. That is why we have more work done against friction. Okay, one more question. Let's see. Now they have asked us about the conditions of equilibrium. ये अभी हम next chapter में भी करेंगे. But remember, whenever an object is in equilibrium, the resultant force acting in any direction must be equal to 0. This is the first condition. And the second condition is that resultant moment about any point as pivot must be equal to 0 as well. So both conditions must be satisfied if the object is in equilibrium. Not only resultant force, resultant moment should also be equal to 0 about any point as pivot. अब उन्होंने हमें एक मोटर बोट दी हुई है, उसके साथ एक पैराग्लाइडर है और उसका उन्होंने हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है. Initially velocity is constant up to 4 seconds. 4 seconds के बाद वो accelerate करती है and it keeps on accelerating. Velocity is continuously increasing. ये हमें ग्राफ दिया हुआ है.
और ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जिस स्पीड से वो स्पीड कांस्टेंट थी, दैट इज अबाउट 4.6 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां पे मैं एक और स्पीड निकालता हूं और वो है स्पीड एट 7 सेकेंड्स। वाई? बिकॉज बाद में उन्होंने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड एट 7 सेकेंड्स। तो मैं 7 सेकेंड पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा एंड आई गेट द आंसर फॉर दैट एज 8.8। So initial speed is 4.6. After 7 seconds, the speed is 8.8 meters per second. This is what we get from the graph. And there is uniform acceleration from 4 onwards. Up to 4 seconds, it was moving with constant speed. What is the acceleration? At 5 seconds. Now, 5 second onward acceleration is constant. हमें बेसिकली इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है v माइनस यू ओवर टी लगा के। 7 सेकंड मैंने क्यों निकाला था? बिकॉज मैं 8.7 सेकंड पे लूंगा और 8.4 सेकंड पे लूंगा। 8.8 minus 4.6 divided by 7 minus 4 and I get the value of acceleration in this case. What is the total distance moved in 7 seconds? Now we know that area under the graph is the distance traveled. In 7 seconds, the whole area, the rectangle below and the triangle above, both areas are to be added to get the total distance traveled. Or you can take a trapezium if you want to and a rectangle. कोई भी शेप बना सकते हैं। I think it, अगर मैं rectangle और triangle लेता हूं, that is more convenient. It will be 4 times 7, 4.6 times 7, और for rectangle के triangle के लिए आ जाएगा half base into height. Height will be 8.8 minus 4.6 and base will be 3. 7 seconds तक. Add them up and you get the total distance. Change in kinetic energy. Half mv2 square minus half mv1 square. I take m common, half common. Put the values. v2 is 8.8 square. v1 is 4.6 square. Simplify that and you get the value of kinetic energy. Change in kinetic energy. अब हमें उन्होंने दिया हुआ है कि जी ये मोटर बोट में ग्लाइडर जो है वो ग्लाइड कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है और एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो कौन कौन सी फोर्सेस पे एक्ट कर रही होंगी? दिस इज माय वेक्टर डायग्राम। एक तो है टेंशन विच इज इन द रोप, और दूसरा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो डाउनवर्ड, और तीसरी है अपवर्ड लिफ्ट जिसको मैंने एफ कहा है। अब क्योंकि टेंशन एक सर्टेन एंगल पे है तो टेंशन विल हैव टू कंपोनेंट्स, टी साइन 25 एंड टी कॉस 25। If the object is neither moving upwards or downwards, then lift force F must be equal to downward forces. In other words, it should be equal to W plus T sin 25. दोनों फोर्स ऐड होकर आपके अपवर्ड फोर्स के बराबर होगी, तभी वो ना अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड जा रहा है। W mg से निकालूंगा मैं, और T उन्होंने दिया हुआ है 28, एंगल इज 25 डिग्रीज। Put the values and you get the answer of the lift. Second part में कहता है what is the value of air resistance? Air resistance will be backwards, but the object is accelerating. Forward force will be T cos 25. अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होता तो T cos 25 would have been equal to R, but there is a resultant force, forward force minus resistive force. Forward force will be T cos 25. Resultant force will be MA because it is accelerating. Using this concept, I find the value of resistive force R, or you can call it F as well. F1 will be equal to MA. F will be equal to T cos 25 because the force in the forward direction is the component of tension. Simplify that for finding the value of R.
And from here, R comes out to be 120 newtons. So resultant force and its application is very important because बहुत commonly ये question वो पूछता है आपसे. Okay, we have two cars, P and Q. P is moving at 20 and then speed increases to 24. Q was stationary at that instant and then it starts to accelerate, and in 12 seconds the speed has reached 30 meters per second. अब वो कहता है जी बताइएगा कि क्या जो Q था उसने ओवर स्पीडिंग की है. His speed is 30 meters per second and limit is 100 kilometers per hour. Either convert 100 kilometers per hour into meter per second or convert meter per second into kilometer per hour. 30 meters per second. 30 into 3600 divided by 1000, it will be converted into kilometers per hour, and the answer comes out to be 108, which is more than 100. So he must have crossed the speed limit. Otherwise, आप ये भी कर सकते थे कि 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते पर सेकेंड. Both methods. Acceleration of car P, V minus U over T, 24 minus 20 divided by 12, because this change has taken place in 12 seconds. Now is the interesting part. वो कहता है जी दोनों गाड़ियां जो है, determine the distance between the two cars after 12 seconds. दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो 12 सेकंड के बाद कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. इट इज एरिया अंडर द ग्राफ फॉर Q, एरिया अंडर द ग्राफ फॉर P. Q के लिए तो बहुत सिंपल है, हाफ बेस इनटू हाइट, मगर P के लिए सारा एरिया लेना पड़ेगा. इट कैन बी अ ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल और इट कैन बी अ ट्रेपीजियम with two parallel sides, 20 and 24. Into height, that will be 12. So Q has traveled 180 meters, P has traveled 264 meters. Difference is 84. So they are 84 meters apart from each other. In D part, it says that after 12 seconds, they both start to move with a constant velocity जो उन्हें achieve कर ली हुई है. That is, Q will be traveling the speed of 30 and P will be traveling the speed of 24. How long will it take for Q to catch up with P? That is, they will both be traveling same distance. ये देखिएगा initially Q ने 180 meters travel किया था और P ने 264. तो वो कहते हैं टोटल कितना टाइम लगेगा that they catch up with each other. That is, for example, P की स्पीड कम है तो वो ऑनवर्ड जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 24t करेगा, जबकि Q जो ट्रेवल करेगा वो 30t करेगा. Now total distance traveled by P and Q will become equal. कितने टाइम में? पहले हम t निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें 12 ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, बिकॉज the total distance from the start to the end for P and Q are now equal. Q is traveling faster after 12 seconds. So distance traveled by Q should be equal to distance traveled by P. Q का डिस्टेंस हो जाएगा 180 plus 30t और P का डिस्टेंस हो जाएगा 264 plus 24t. यहां से हम T के लिए सॉल्व करेंगे. And from here, T comes out to be 14 seconds. That is, after 12 seconds, Q will take further 14 seconds to catch up with P. So what is your total time? 14 plus 12 is 26. इनको बेटा आपको खुद भी सॉल्व करना है, बिकॉज अगर आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर ये चीजें वैसे समझ तो आ रही होती है, बट यूज योर ओन कैलकुलेशंस एंड थिंकिंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. Okay, let's see another question. We have a remote control aircraft
and they ask us what is Newton's first law. It says every body continues a state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by a resultant force. Newton's फर्स्ट लॉ. अब जरा देखिए हो क्या रहा है. -7 से स्पीड स्टार्ट होती है, इट बिकम्स 0 एंड देन वो अपवर्ड वेलोसिटी से एक्सीलरेट, उसी स्पीड से एक्सीलरेट कर रहा है. The variation time of vertical velocity v of the block is shown. Velocity is taken positive in the upward direction. इसका मतलब है वो पहले नीचे की तरफ आ रहा था, रुकता है और फिर ऊपर जाता है. कि पहले ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, रुकेगा और रुकने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ आएगा. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. पहले वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है. दिस इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ग्राफ. नेगेटिव मैक्सिमम है, फिर नेगेटिव वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता 0 हो रही है. इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट पहले नीचे की तरफ जा रहा था, यहां तक कि वेलोसिटी 0 होती है और फिर वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है. तो इमेजिन दिस थिंग, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स. एस निकालना है आपने. बड़ा ट्राइंगल जो है वो S1 होगा, छोटा ट्राइंगल जो है वो S2 होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो S होगा. हाफ बेस इंटू हाइट डाउनवर्ड्स, देन वी हैव S2, जस्ट 1 सेकेंड, 2 to 3 इज 1 सेकेंड, बेस हो जाएगी और हाइट जो है वो आपकी 3.4 बन रही है. सो डाउनवर्ड वो 6.8 गया, अपवर्ड वो 1.7 आया. तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन विल बी डिफरेंस व्हिच इज 5.1 एंड इट इज अपवर्ड्स, सॉरी डाउनवर्ड्स. दिस इज डाउनवर्ड्स. अभी तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक नहीं पहुंच पाया. Change in gravitational potential energy, mgh. H is 5.1, mg is the weight, 15 newtons, वो दिया हुआ था. Magnitude of acceleration at 2 seconds, just find the gradient of the graph. 0 minus 6.8 भी कर सकते हैं, minus 6.8 डिवाइड बाय 2 सेकेंड में किया उसने, ये आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी. अब वो कहता है व्हाट इज द टेंशन at 2 seconds. Tension, resultant force is equal to tension minus weight. Accelerate कर रहे हैं upward, तो tension will be equal to ma minus mg plus mg. वैल्यू पुट कीजिएगा, ma आपकी हो जाएगी m into acceleration, और यहां से हम भी टेंशन निकाल सकते हैं which comes out to be 20.2 और 20 न्यूटन्स. क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हमें रिजल्टेंट फोर्स ma से निकल आएगी और टेंशन जो होगी वो mg को जब माइनस करेंगे टेंशन से, तो इसलिए वो आपकी अपवर्ड फोर्स जो है वो ma निकल रही है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब ये हमारे पास एक बॉल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है आपको, और वो कहते हैं जी वो गिरती है एंड देयर इज अ बीम ऑफ लाइट. वो बॉल बीम ऑफ लाइट को कट करेगी. इन अदर वर्ड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.28 meters. Explain why the force due to air resistance acting on the ball may be neglected because it is a very small time interval, small distance traveled. Weight is very large as compared to air resistance, and it is a small distance that it has traveled. That is why it can be neglected. How much time? We know that initial velocity will be 0. Distance is 0.28. And in this case, acceleration will be 9.81. So we will be using the formula S is equal to half AT square. And using that, we can find out the value of T.
We are using S is equal to half AT square. And from there, I will make T as my subject. So I get T is equal to under root 2 into distance divided by acceleration. And from there, I get the value of T as 0.24 seconds. Okay. So tomorrow we're going to have kinematics test, and Monday onwards we'll be starting dynamics, the remaining portion of the dynamics, that is momentum and so on. Time interval during which the beam of the light is broken by the ball. That will be the time it travels a distance of पहले देखिएगा हमने डिस्टेंस जो ट्रेवल करवाया है वो 0.28 है. अब 0.28 में आपने इसका जो डायमीटर है वो भी ऐड करना है, because that is the time it will take to travel. That means 0.28 plus the extra distance it travels, S हम निकालेंगे by finding the 2 times, and from there the time difference will give you the value of a time interval. पहले हमारे पास आंसर आया था 0.24. अब 0.280 में हमने ऐड किया है 0.08, तो ये बन जाएगा आई थिंक 0.36. आई थिंक मैं 2 गलत लिखा हुआ है, इट इज 0.36. ठीक है, उसमें मैंने ऐड किया है वो वैल्यू. आई जस्ट गिव यू वन मोर एक्सेप्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे. ओके, यहाँ पे मैंने ये कैसे निकाला है, मैंने ऐड किया है इक्वल टू 0.26 plus 0.08. This is the distance it has traveled from the top. ये मैं वैल्यू यहाँ पे यूज करूँ. So the difference of the time will give us the value of time interval that the ball travels from the top of the beam to end of the beam. Here, I think I have taken the first photograph. Yes. आखिरी बॉल में कहते हैं a different ball is released with same position, a steel ball, much lower density, air resistance cannot be neglected. Of course, in that case, the velocity will be less and the time interval will be more, because वहां पे फिर उसकी एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी और वो सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहा होगा. अगर वो कम स्पीड से मूव करेगा तो वो ही डिस्टेंस जो पहले ट्रेवल कर रहा था कम टाइम में, इट विल टेक मोर टाइम. In that case, time interval will increase. That is the logic for this question. Clear?